चल रहा है सर। तो चर्चा मेरिट पर चलना चाहिए सर। इसमें जो कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे और कलंकित वगैरह जो हुआ है। हमारे देश इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो। सुनने का हिम्मत नहीं है, क्या करें? अरे हम क्या ज्यादा कुछ ये रक्षा मंत्री जी है। मनीष तिवारी जी, हो गया ना इनका विषय? 1 मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हो गए और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, that can the procedure of the ethics committee override the fundamental principle of natural justice, which is the organizing principle of every justice system in the world? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में 2 चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। The ethics committee at best can make a recommendation,
that whether a person is guilty or a person is innocent, it is this House sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the Ethics Committee is fundamentally flawed in my respectful submission. Okay. तीसरा, अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3-line व्हिप इशू किया है. मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं. Today this House is sitting as a judge and a jury in an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the Privileges Committee, or you are considering the report of the Ethics Committee. Can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete travesty of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this House should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this House. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, the अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स पे तो मैं आया भी नहीं हूं. जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है. मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं. आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी. अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट. टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स. वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, एक मिनट. माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है. ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें. आपके बहुत विनम्रता के साथ 4:30. मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर. अध्यक्ष जी, न्यायाधीश नहीं हूं. अध्यक्ष जी, सभापति हूं. अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी. आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं. टुडे वी आर सिटिंग एज अ jury, we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues. My next question, Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य, एक प्लीज. इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है. आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं. मैं यहाँ निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है. आप गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए. ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें. आप गलत तरीके से. मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं, और निर्णय करेगी सभा. निर्णय करेगी. और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने हमने तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो. हमने तो व्हिप किया प्रेजेंट करने के लिए. प्लीज एक मिनट बैठिए. ये सभा निर्णय कर रही है, और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है. प्लीज. मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं. क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कि नहीं बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर. दिस इज द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस. इट इज द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस. The fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this House. I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn, because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो,
तो एक विप के माध्यम से उनको ये हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं देख जी अगली बात पे आता हूं, एक अगली बात पे आता हूं। 1 मिनट आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to members of parliament. I want to read out Article 105 too. Mr. Speaker, sir. Article 105(2) says, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And he cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called Hina into Gavi ji. question in this august chamber? Can this? माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए, ले दीजिए। अध्यक्ष जी, my humble submission is, can this august house override the founding document of India which has brought this house into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity for anything done in the house. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this house, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर, ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर, यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी, जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं, और मिस्टर हीरा नंदानी, जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा, और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है, और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से
50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला। और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ में आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है, हम सबने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद है, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है। उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है। अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। अभी यहाँ पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है, अलग अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहाँ सांसद है, फीमेल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनके। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमेटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है,
एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहां पे कमिटी ने पूछा। और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है, वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए। उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं, इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउ द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी। सर, allegations against Moha Moitro have been placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is a parliament. It will be on record, that speech. But if Moha Moitro be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Moha Moitro be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। No, कल्याण sir. बनर्जी। No. What I propose, my party's spokesperson will be Moha Moitro herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, the House will go to take a decision. Will expel her. सर, मान्य We know it. जो सदस्य का You will निष्कासित affect का the- आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपकी अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। कल्याण बनर्जी जी, नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस कोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के
जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं को पालन करते हैं, ये उनके होता है। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे कल्याण जी, आगे बुलाऊं? हाँ हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। On this house, in parliament, her speech has been recorded. And it is now the property of the house. But against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. एक मिनट सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग, जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्षीय निर्देश, और उस अध्यक्षीय डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई परपाटी उपस्थित नहीं कर रहा। अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने परपाटियां लागू की है। हाँ हाँ बोले सर। मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर। ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी। वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने, सारे तस्वीर स्पष्ट थी। सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर इतिहास है। आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर। सर महिलाओं के हाँ बोलो कल्याण जी सर उनको अलाउ कीजिए। नो काइंडली अलाउ कीजिए। नहीं कल्याण जी आप कल्याण जी बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा। ऑन रिकॉर्डे रखते হবে, ऑन रिकॉर्डे रखते হবে না, পার্টি থেকে অন রেকর্ডে রাখতে হবে। कल्याण जी आप बोलिए। বলবো শুনতে বলুন। यस सर, the honorable speaker kindly see that the fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a parliament, it's a house members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahua Mohito to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then no. Please. Against us would be privilege would be there. Against us everything would be there, and they will be going on disturbing everything every day. Sir, you see,
fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that, because of who is the main man. Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikanta Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter, said in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful, it's not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikanta Dubey, that's where, sir, Mahua Moitro was having, he was having a right to cross-examine each and every three persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier? This is not the point. Point is that, sir, law is not remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgment by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, right manner. Then it's not a case, sir. It is not. There is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahua Moitro's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. There was a violation, constitutional violation is being made. Sir, next. Sir, now, sir, come to the to peace. Sir, kindly see. Repeatedly it is being referred regarding the sir, 2005 cash for query case. Kindly come to report page 18. In the page 18, it has been said under serial number 12, Sri Pawan Kumar Bansal was appointed as chairman of the said committee. Committee examined Shri Anuruddha Bahal. Message, sir, आपको time देना होगा sir. Today, sir, time देना होगा sir. I have sir, Susani Raj and Sri Kumar Badal of the Portal Corporate Corporation, so and so was, and the member have been examined. They have been examined. Here, sir, the Hiranandani has not been examined at all. Hiranandani has not been examined. It is not, it is just an I was, please, sir. Sir, if you are the Honorable Minister, always you have a right, but kindly do not excuse me. Sir, this has been, he has a right. Okay. Now, Muddal, sir, give me time, sir. Please give me time. You have not allowed Mahua Moitro to speak. Kindly allow me to speak, sir. Now, sir, kindly come. This report speaks about, I am coming, sir. What is the, kindly come. Serial number 43. It has been said that, quoted his car, who has said? Darshan Hiranandani has not said. Okay. What Joy has said, everything has been written here. Sir, please, sir, sir. I am coming, sir. Other points are there. Kindly wait. Kindly give me a chance. Today I am just praying before you. Kindly render justice to me. आप एक मिनट बात कर दें. Not एक शब्द में नहीं होगा. एक मिनट बात कर दें. Please, sir. Sir, it has been,
Sir, if he relied upon this section 43 of the Information and Technology Act said it's a violation of section 43. Where is this section 43 has said if a password, even let's assume for the argument's sake, allegations are correct. Why this section 43 has said if password is given to anyone, it's an offense under the Information and Technology Act. If anyone uses my computer without my consent, then section 43 is applicable here. This has not been done, sir. Okay. Now, sir, please, sir, please. For God's sake, please. Sir, kindly see. The point is, here is the finding. Kindly see. Finding is, the recommendation is kindly give me this chances. Kindly see the recommendation conclusion. Conclusion is, sir, the proved, it has been proved, cash has been taken. Where is that? Where is this finding? Where is this finding on facts? How much cash? There is no finding. There is no, not based on evidence. Now I am coming a very important, sir, I am coming a very important question. I will conclude. Sir, I should have given a chance. Today, I am concluding, sir. Sir, with great respect to the Honorable Speaker, with great respect to all the members of this House, this House does not have power to remove someone as a member. Constitution has provided provision for disqualification. This disqualification has been provided by the Constitution under Article 102 and 10th schedule of the Constitution. It is not coming within that. Sir, you are having the power to suspend under Rule 374 of the rules of the Parliament itself. Therefore, let's assume for argument's sake, there is no power of removal by the House itself to remove to expel and to remove the Mahua Mitra. Constitution does not permit, rule does not permit, even any precedent has been done. That's contrary to the rules, that's contrary to the precedent. No precedent, no rule can stand, sir, above the constitutional provision. मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं ऐसे तो, और वरिष्ठ अनुभव भी है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर, नियम प्रक्रिया बनी हुई है। नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है, उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं। वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर समझे बात को, हम कमिटी के प्रस्ताव पर, ये चीजें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। ये तो उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कंफ्यूजन है? नो। देखो, मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप देखिए, आप दो बड़े वकील हैं, जस्टिस है, दो वकील, आप तीसरे वकील, आप वकील हैं, तीनों वकील एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए। ये हाउस में थोड़ी चर्चा होगी। गंभीरता इससे भी पता चलती है कि टीएमसी के अपने सदस्य नहीं आए, प्लीज वही साथ में नहीं आधे अधूरे। प्लीज, ये सब प्रोसीजर, एथिक कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, अपनी जितनी भी कमेटियां हो, उन कमेटी प्रस्ताव करती है, उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। नो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो ना। आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि न्याय करो, ये तो उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। नो, गिरधारी यादव जी प्लीज, नो, आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो। ये सदन इसके लिए नहीं है।
गिरधारी यादव जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरधारी यादव जी। आज मैं इस सदन में जो खड़ा हुआ हूँ बड़ा ही पीड़ादायक है। एक तो मैं माननीय सदस्य को एक्सपेल कर रहे हैं, दूसरे साथ ही साथ ये दुर्भाग्य है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया, उसको नहीं बुलाया। तो हम तो एमपी से नीचे हो गए। क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था निशिकांत जी के माननीय सांसद को, वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, ये मेंबर ऑफ द कमिटी ये क्या बोल रहे हैं? ये मेंबर ऑफ द कमिटी ये क्या बोल रहे हैं? और ये आपके निर्णय के खिलाफ बार-बार सजा नहीं हो सकता है। हसन मसूदी जी, दर्शन हम लोगों ने कमेटी में मांग किया था, हमारे कमेटी ने कहा था बुलाएंगे और नहीं बुलाया, कोई चर्चा नहीं हुआ। हसन मसूदी जी, हसन मसूदी जी, आप बोलना चाहते हैं? हसन मसूदी जी, Sir, honorable speaker, sir, there can be no disagreement with the observation made by you that it is not the honorable speaker that has taken. It's the honorable speaker who has to take a decision, but it is the house that has to take decision. But that must not make us depart from. ये हसन मसूदी जी आपके सदस्य हैं। Sir, हसन मसूदी, sir, हसन मसूदी जी, sir, there can be, sir. आप बोलिए ना गिरधारी जी, आप गिरधारी जी बोलिए ना। नहीं, आप वहां से बोलिए, अपनी सीट पे जाके बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ माइक चालू नहीं होगा आपका, वहीं बोलो अपनी सीट पे जाके। आ गया तो बोलेंगे नहीं, आज क्या करें? अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हीरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। 2 मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंट नोट दीजिए, मेंबर है, डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब एथिक्स कमेटी के मेंबर को मौका देना चाहिए। और एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता है। न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा है, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहां तक पासवर्ड, एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो। कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं, ये सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुनाया था मैं, ये सभा का अधिकार है। ठीक है अध्यक्ष महोदय। और जहां तक शपथ पत्र का, शपथ पर नहीं हो सकता, क्रॉस पर होना चाहिए था। बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड कभी नहीं दिया गया। पासवर्ड महुआ मोहित्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से, और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं। बहुत सारे एमपी नहीं बनाते, बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो 2 घंटे में पढ़ लिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया, लोकतंत्र में डराया गया है। आप मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है। हम तो लिख के दिया, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम 3री बार सांसद हैं, 4 बार एमएलए हैं, बुढ़ारी में सीख सकते हैं हम। बूढ़े का वो पोस्ट मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, इसलिए बिना काम का बाजबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है, सबके लिए अलग अलग कानून होगा।
वही मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी वाली लागू करना चाहते हैं। ये मनु का धर्म नहीं है, ये मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का गला मत दबाइए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए। महुआ मेहता का जो प्रश्न है, 1 मिनट प्लीज, अपराजित 1 मिनट, माननीय सर प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस संसद की गरिमा को मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी माननीय सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं? इनकी बात से क्या माननीय सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता? ये बात से सहमत हैं क्या आप? क्या करेंगे? मैं जो बताता हूँ, महुआ मित्र को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा ये डिबेट। नहीं, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? कौन बात पर? गिरधारी जी यादव की बात पर। क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है, ये बात है सर। वो एडमिट करता है कि नहीं जानता। मेरा पीए को पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया। आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने कि तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूं। नो, क्या है? चलिए, कहा आप तो ले जाते हैं। हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है, क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम महुआ मैत्र, हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, यह गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की,
इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर, हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी। Sir, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Srimati Moha Maitra, MP for the direct involvement in cash or carry in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Moha Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में नीति सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मोमा मोत्रा के निष्कर्ष संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Moha Maitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of Parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Moha Maitra as member of Parliament, member of Lok Sabha, is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोत्रा के विरुद्ध
सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. John Brittas, I introduce the bill, sir. the Antiquities and Art Treasures Amendment Bill 2023. Shri Sir. Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further. The question is that to leave amend the be Antiquities granted Act. to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, insertion of sections 24 capital A, 300 capital A and 302 capital A. Shri Sir, Sujit Kumar to Sir. move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the The IPC. question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. The voice is getting feeble. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sir, I introduce the bill. Shri Sujit Kumar. Sir, only after I give, I have to open the window. Sir, आपका काम था सरल कर दे रहा हूँ. So Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. And you do it after the House approves it. And that is reflected through me.
The Central Educational Institutions Reservation in Admissions Amendment Bill 2023, Shri Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Central Education. Just the bill. Sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Good. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. The Representation of People Amendment Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The National Commission for the Welfare of Youth Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The representation. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Participation of Workers in Management Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 343, 344 and 348, etc. I move for leave. Sir. Shri R. Giri Rajan to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri R. Giri Rajan. I introduce the bill. The Black Money Recovery Bill 2023. Shri M. Mohammad Abdullah to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I seek to move for the leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri M. Mohammad Abdullah. Thank you so much, sir. I introduce the bill. The Freedom of Marriage and Association and Prohibition of Crimes in the Name of Honor Bill 2023. Shri Ramnath Thakur to move for leave to introduce the bill. Move kiya. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Good. Thakur Sahab said aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Ramnath Thakur. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 124 and 217. Sir, Chairman, sir. Sir. No, sir. I have to open the door. Shri V. Vijay ready to move for leave to introduce the bill. Now. Chairman, sir, reservation in judicial appointments for backward classes in No, the no. Supreme Court and High Court, sir. No. Sir, I move for leave to introduce Constitutional Amendment Bill 2000. Good enough. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri V. Vijay Reddy. Sir, I introduce the bills. The Consumer Protection Amendment Bill 2023. Shri V. Vijay Reddy to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce The Consumer question Protection is Amendment that Bill leave be 2000. granted to introduce the bill.
Those in favor will please say aye. Aye. Which is I already forgot. Okay. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, I introduce the bill. Sir. The Central Justice Amendment Bill 2023. Shri V. Vijay Sai Reddy to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce Central Universities Amendment Bill The 2020. bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, I introduce the bill. Sir. The Prevention of Custodial Torture Bill 2023. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the bill. Sir, with your kind permission, I move to seek the leave of the House for the introduction of this bill. To move the bill. To move the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, I introduce the bill. Thank you so much. The Constitution Amendment Bill 2023, Amendment of Article 51, Capital A. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the bill. Sir, with your kind permission, I wish to seek the leave of the House to move this bill, which is all about fraternity. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you so very much, sir. I introduce the bill. The Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2023. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Aye. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. I introduce the bill. Thank you, sir. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, substitution of sections 305 and amendment of section 375. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek leave of the House to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Adaptation of Climate Change, Resilience, Rehabilitation and Resettlement Bill 2023. Shrimati Vandana Chauhan to move for leave to introduce the bill. So I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shrimati Vandana Chauhan. I introduce the bill, sir. The Constitution Amendment Bill 2023, insertion of Article 16, Capital A. Shri M. Shanmugam to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I move to leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Shanmugam. I introduce the bill, sir. The Motor Vehicle Drivers and Other Workers Welfare Fund Bill 2023. Shri M. Shanmugam to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Shanmugam. Sir, thank you, sir. I introduce the bill, sir. The Representation of People Amendment Bill 2023, Shri Javed Ali Khan to move for leave to introduce the bill. माननीय सभापति जी, मैं लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2023 को सदन में पुरस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Javed Ali Khan.
मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। The Constitution Amendment Bill 2023, Amendment of Articles 111, 200 and 201. Shri A.D. Singh to move for leave to amend the bill. Sir, I move to leave for leave to introduce a bill further to amend the The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I wish to introduce the bill. You With don't your wish. permission, I wish to introduce the bill. No, don't wish. You say I introduce the bill. I introduce the bill. The Special Financial Assistance to the State of Bihar Bill 2023. Shri A.D. Singh to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, insertion of new section 377 capital A. Shri A.D. Singh to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I introduce the bill. The Witness Protection Bill 2023, Shri S. Niranjan Reddy to move for leave to introduce the bill. Not present. The Compulsory Teaching of Lifestyle for Environment Life in Schools Bill 2023, Shri Biplab Kumar Dev to move for leave to introduce the bill. I rise to leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Biplab Kumar Dev. I introduce the bill. The National Commission for Fishermen Welfare and Support Bill 2023, Shri Mastan Rao Bida to move for leave to introduce the bill. Not present. The Mental Health Care Amendment Bill 2023, Shri Surendra Singh Nagar. Sir, I move for leave to introduce a bill. Let me read out. Let me open the window for you. Shri Surendra Singh Nagar to move for leave to introduce the bill now. Sir, I move for leave to introduce a bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Surendra Singh Nagar. Sir, I introduce the bill. The Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023, Shri Tiruchu Siva to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Tiruchi Siva. Sir, I introduce the bill. It has come to an end. The list has come to an end. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee, in its meeting held today on the 8th of December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and return of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha. The Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023, 2 hours. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, 1 hour.
honorable members, considerable time was taken today for the motions for introduction of about 70 private members' bills. I suggest we may continue with the consideration of private members' bill beyond 4:30 p.m. till 5:15 p.m. After that, permitted special mentions will be taken up. Is that sense of the House? The Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 153 and substitution of Articles 155 and 156. Further consideration of the following motion moved by Dr. V. Sivdasan on the 9th December 2022, that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. On the 9th December 2022, Dr. V. Sivdasan had not concluded his speech while moving the motion. He may therefore be called upon to continue his speech. Dr. V. Sivdasan. Respected Chair of the House, here the Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 153, substitution of Article 155 and 156 is a very important bill. It is in the public interest that the governor's position is to be filled not by the president under the advice of the union government. The governor should be appointed by the state itself. The will of the people has to be respected. The governors cannot act as stooges of the union government. Sir, currently, governors are working as tool of the institution of the union government into the state. We have a lot of examples. The first article of our constitution starts with the sentence that I quote, India, that is Bharat, shall be a union of states. It proves the importance of the states. Federalism is a part of the basic structure of our nation, basic structure of our constitution. We all know the existence of our great nation. India is linked with the existence of its basic character, that is unity in diversity. If the diversity is ruined, then the majority of the people will be marginalized. That means they will lose their identity, language, culture, and habitat. It cannot help in their development. Diversity is the basic principle of the federal structure of our nation. Unity develops and strengthens its diversity. The very structure of our nation, India, as the union of the states, is built by the positive spirit of love, affection, and great respect to the diversity. Respected Chair, our great nation, India, was not built by the bricks or bullets and guns or the missiles and forts. It was built by the struggle of freedom fighters, tears of workers, and the sweat of peasants. Respected Chair, they have differences in their opinion, they have differences in their religion, languages, ideas, and identity, but they all are those differences, above all differences, they had deep commitment to the values of humanity. Respected Chair, here what do we see? The rights of the states are reduced day by day by the union government. Respected Chair, not only have the rights of the states, the rights and the powers of Rajya Sabha, the Council of State also being reduced by the same union government through the money bills. Respected Chair, if we fail to protect the interest of the state
as the representative of the states, then the great values of federalism will be destroyed by the rulers. Chair, respected Chair, world history reminds us the autocrats and their political parties have always attacked the diversity, and they have tried to establish their own power, and they have promoted only a monolithic culture. Respected Chair, the dangers of this attitude had been proven by the experience in various countries like Italy and Germany. We, as the representative of the people, as the representative of the state of India, should oppose the attack against the diversity, the steps against the legislative rights of the states, and undemocratic style of functioning of union government. In India, we have various identities. It is our strength. The great forefathers of our nation told us, unite against intolerance. Respected Chair, when the British colonial powers, they had divided the state of Bengal into West Bengal and East Bengal. The people of Bengal had united and fought against the bifurcation. Finally, the British Empire, they had to surrender in front of the massive movement led by the unity of the people. The leaders of the present colonialism, big corporates, have identified that one of the premier enemies of them is the unity of the people. That is why the ruling class of the country is practicing the same kind of colonial policy, divide and rule. The governors in the states, they are working as a tool of the imperialist policy of divide and rule. Wherever the state government is taking the stand to promote the secularism, then the governors are trying to promote the politics of hate. Respected Chair, in Kerala, the Assembly, everybody know that, the Assembly passed a resolution against NRC and upheld the secular values of the nation, secular values of the states, but the governor of Kerala had openly supported the politics of communal venom. Sir, the division of power is the part of our constitution. This is a part of our nation character. The powers are divided between states and union. But day by day, the powers of the states being reduced by the union government. The union government is utilizing the residuary powers to capture the powers of the states. Unfortunately, the governor has also become instrument to implement the plan of the union government. The education and forests, the two sectors which are the classic examples of violation of the division of power. Education and forests were the state subject, but now the entire sectors are under the union government. Earlier, agriculture was in the hands of the states, but the intrusion of the union government has happened there too. The dam and the hydel projects in the states are also serious cases of capture of power. Earlier, the state governments have some powers related to the state. The state governments have taken the stance against these kinds of interventions. But some governors of the states has openly criticized the initiatives of the states. It has widened the gap between the elected state government and the nominated governors. The people of the state are requesting for more autonomy, but the union government is trying to pave the way for more centralized administration through the governors. The state like Kerala, Tamil Nadu,
and Telangana are fighting for their rights in various ways. The representative of these states are here. Sir, kindly look at the approach adopted by the governors in the states. They are standing against the interest of their own state governments. The centralization versus decentralization is the core of the clash between states and the governors. Decentralization is the spirit of the age. That means the autonomy of the states, but also the autonomy of the Panchayati Raj institution. It is also a serious concern of the democratic movement in the country. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. The existing wrong notions of the government, governor, and the union government should be corrected. The governors are holding the bills passed by the assembly in the name of concurrent list or reductory powers. The union government has so far ignored the demand of the states to place at least the residuary powers of legislation in the state list. The ministers are here, but the government, the union government, is not ready to hand over these residuary powers to the states. We have seen the examples of usage of residuary powers in many ways against the interest of the states. In agriculture sector, the union government has made new laws, but it was withdrawn by the people because of the struggle of the people. About 800 people martyred in the struggle. But the governors, the titular head of the nation, were silent. They did not make any single statement against the move of the union government, the move of the government against the people, the move against the farmers of their state. On the other hand, many times the governors have criticized the state government. When the state government intervened for the protection of the people in the state assemblies, in the state passed the assemblies, in the state passed the resolution against the anti-people laws made by the union government. The strongest position against the anti-people laws of the union government has been expressed by the Legislative Assembly of Kerala in the resolution. But the titular head of the state took the stand against the resolution, against the interest of the state and the interest of the farmers. Then what is the meaning of the usage? The head of the state, the word head of the state, we all know the federal structure and great values of the constitution will be destroyed by these kinds of legislations by the union government. In education sector, state government have faced various issues. Everybody knows the extreme centralization in education sector is the one of the motto of the union government. The issue of NEET still exists. The Tamil Nadu state, the representative from Tamil Nadu is here. Tamil Nadu state government has taken a very strong stand for the protection of the interest of their state in the education sector. Naturally, it is against the interest of the union government. It is against the wishes of the union government. The Legislative Assembly has passed the resolution against the NEET. The governor of the state openly criticized the state government and their principled position on the issue of NEET. The powers in the union government, the union list, are in the hands of the union government. They are taking the decisions unilaterally without any inclusion of the opinion of the states. Moreover, there is no formal institutional structure for the mandatory consultation
between the union and the states for the legislation under the concurrent list. Sir, state revenue and the role of the governor should be discussed here. Why? This is an important subject. The revenue of the state is facing a lot of problems because of the intervention of the governors. In this great republic, one of the governor in India openly told the public that he did not sign the budget speech of the state government. It has created an uncomfortable situation in the state. The duty of the governor is to follow the advice of the cabinet. The wise men who have adorned this post had worked in such a way. But reality of the spirit is that the wisdom is rare in Raj Bhavans. The post-liberalization period witnessed a sharp decline in the fiscal health of the state government. Most of the states are facing fiscal crisis. The important factor behind this fiscal crisis strain is the policy of the union government. That is why the states are facing the fiscal crisis. Many states have tried to introduce different alternative measures to overcome the situation. But unfortunately, then the governors are making headwinds. The governors are making headwinds. The residuary powers of taxation in the sphere of services are being unilaterally used by the union government. To the total exclusion of the states, the GST captured the end right of the taxation of the states and LSGs. The allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation. Honorable member, may I just request you, in the previous session, you had taken about 21 to 31 minutes roughly to speak. You have taken about 15 minutes. So if you think about concluding shortly, then other members will also get an opportunity. I will finish. Thank you. Because you had already spoken in the earlier session, that is why I'm just requesting. Thank you. The residuary powers of taxation, already I mentioned here, the allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation of the union government is not charity. It is the right of the states. So the financial allocation should not be linked to any kind of reforms by the union government. The governors should stand for the financial autonomy of the state. It is the duty of them. The financial burden of the states caused by the governors should be discussed. Fiscal crisis of the states and the expenses of the governors should be debated. I have received an answer from the government to my question that the total expenditure of the National Mission for Libraries in the year 2019-20 is only 73 lakhs. Annual expenditure of some Raj Bhavans is more than 30 times. Respected Chair, media has reported Maharashtra government has given an answer to an RTI question. They revealed that the expenditure of governor for 2 years is 60 crore rupees. It is the 10 times of the allotted amount of the union government to National Mission for Libraries. Currently, the expenditure of the running of the office of the governor and the family of the governor is the duty of the state. This expenditure of the governors should be audited by the society. The governors are appointed by the union government, but the salary and other allowances are paid by the state government. Appointed by the union government, but the salary paid by the state government. We need to start it is wrapping up, irrational. honorable member. The salary of the representative of the union government appointed by the union government should be paid by the union government. The burden of the salary and upkeep should not be transferred to the state. 1 minute, within 2 minutes, I will finish. The Raj Bhavans are representing the colonial era of India. Majority of the Raj Bhavans are not only the residents of the governors, but also their leisure houses. Look at the existence, expenditure
and facilities of the Raj Bhavans. In Maharashtra, 4 Raj Bhavans, Mumbai, Nagpur, Pune, Mahabaleshwar. Sir, one governor is residing in 4 palaces in a single state. A palace for 3 months. That means for the rest of 9 months, the palace is empty. Then how this palace will be maintained? When governor is not there, who will occupy the palace? Crores of Indians are living without a shelter, but a governor, a titular head of the national state, is using 4 palaces. Why these kind of practices are continuing? During the travel, the VVIPs, chief minister and ministers are utilizing the circuit houses or guest houses. Then why the permanent palaces for the governor in different places? They hardly stay in these palaces. Uttarakhand, sir, 2 Raj Bhavans, Dehradun and Nainital. Nainital Raj Bhavan occupies 220 acres land, which includes 45-acre golf course. The residence of the governor is a highly restricted area, but the golf course is 45 acres. State government should ensure that this land is occupied, land is properly utilized. And in Tamil Nadu, sir, Tamil Nadu, there are 2 Sir, I'm giving you the last minute. Thereafter, I'll move on. I will mention only the residential. I've already indulged you in the previous session. You have spoken 31 minutes. Tamil Nadu, there are 2 Raj Bhavans. They are Chennai and Ooty. Chennai Raj Bhavan estate is 156 acres. It is in the reserved forest area. It might be buffer zone. In Tamil Nadu, I don't know, the governor is in the buffer zone. Ooty is one of the noted tourist place of the nation. Is the governor is a tourist, sir. Winter palace, summer palace. How rich a country, sir. In West Bengal, Honorable member, I'll have to move on. I'm moving West on. Bengal, I'm moving on. Okay, I'm moving on. 1 second. Please conclude your last comments, please. West Bengal, 2 Raj Bhavans. One is Calcutta and second one is Darjeeling. In Odisha, your own state, 2 Raj Bhavans. One is Bhubaneswar and another one is I Puri. think I'll have to In move on. Madhya I've Pradesh, given you 2 time. Raj Bhavans. I've requested you repeatedly. Please, your closing comments and we move on, Okay, sir, please. I am finishing. These things, the governors, the titular head of the states, how they are making the hurdles of the state, functioning, administrative function of the state, these things, this August House, please discuss seriously. And I request the state, all of you take the initiative for stop the revenue, making the hurdle, stop the making the hurdles and taking the wrong practices of the governor and try to end the colonial era practices in our nation. Thank you, sir. Thank you. With these words, Thank you. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Anil Agrawal, Honorable Member. 9 minutes allotted to you. महोदय, भारतीय संविधान की एक खूबसूरती रही है कि किसी भी पद पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई ना कोई क्रॉस चेक जरूर रहता है। इस संविधान में जो गवर्नर का पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और जब संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को बनाया बहुत सोच समझकर इस पद को बनाया गया और इस पद पर हमेशा बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं। मेरे जो मित्र केरला से आते हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगा, वहाँ वर्तमान में भी जो गवर्नर है महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर। आप अगर उनकी स्पीचेस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप किसी विद्वान व्यक्ति की स्पीच सुन रहे हैं। और हिंदुइज्म और जो जिस धर्म से वो आते हैं मुस्लिम, उसके बारे में श्लोक और आयतों के माध्यम से जो वो बोलते हैं पूरा देश उनकी बातों को सुनता है।
अधिकांश ऐसे हमारे महामहिम हैं जो वास्तव में बहुत ही विद्वान हैं और वो संविधान की रक्षक के रूप में स्टेट में काम करते हैं। जो मेरे मित्र ने कहा, अगर उस बात को मान लिया जाए तो पूरी जो संवैधानिक ढांचा है वो ही चरमरा जाएगा और जो क्रॉस एंड चेक की जो हमारी एक संस्कृति है, पद्धति है, एक तरीका है, वो पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट्स जो चुन के आएंगी वो पूरी तरह से मनमानी हो जाएंगी, बेलगाम हो जाएंगी। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे भी लोग चुन के आ जाते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, किसी भी मुद्दे पर चुनकर आ गए और उसके बाद वो मनमानी करने की कोशिश करते हैं। और मेरे विद्वान मित्र ने जो कहा, जिस प्रकार से वो महामहिम को हटाकर और उस पद को दोबारा लाना चाहते हैं, उसमें उनका जो सजेशन है उसमें ये है कि साहब वहाँ के जो एमएलएज हैं, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहाँ के जो कॉरपोरेशंस हैं, वो सब मिलके महामहिम का चुनाव करें इलेक्शन। महोदय, स्टेट में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है और एक स्टेट में अगर दो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दोनों इलेक्टेड हो जाएंगे तो शायद जो पर्पस था हमारे संविधान निर्माताओं का गवर्नर के पद पर नियुक्त करने का, वो पूरी की पूरी तरह से डिफीट हो जाएगा। महोदय, मेरे मित्र ने एक ये भी सुझाव दिया है अपने बिल में कि 2/3 अगर एमएलएज को चाहें तो वो गवर्नर को हटा सकते हैं। गवर्नर के पद पर वर्तमान में जो नियुक्ति होती है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और राष्ट्रपति इलेक्टेड पद है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें हर विधानसभा के विधायकगण, लोकसभा के सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, सबकी डिफरेंट वैल्यूज एमएलएज की रहती है, एमपीज की रहती है और पूरे देश में उसका एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और उस चुनाव के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति का पद पर व्यक्ति आसीन होता है। उनकी इंटीग्रिटी को या उनके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शंका की दृष्टि से देखना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। मैं आपको पूर्व में भी ले जाना चाहता हूं, जो मेरे मित्र मुझे लगता है गवर्नर के पद से परेशान हैं। कुछ कांग्रेस सरकारों में इस प्रकार के गवर्नर्स रहे हैं जिनका आचरण ठीक नहीं रहा, तो मुझे लगता है वो दृष्टांत उनके सामने है, लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और गवर्नर्स की अपनी एक गरिमा है। आप देखिए, जब स्टेट इलेक्शंस का चुनाव होता है उस समय गवर्नर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गवर्नर भी राजनीति से प्रेरित होकर काम करने लगे तो मुझे लगता है पूरी की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाने की व्यवस्था है, उनका सदन में जो बहुमत सिद्ध करने की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है। महोदय, राजभवन के रेजिडेंसेस के बारे में कुछ मेरे मित्र ने बताया है कि किसी स्टेट में 3 हैं, कहीं 4 हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजभवन वास्तव में कई स्टेट में ज्यादा हैं, लेकिन उसमें 1 स्वीट या 2 स्वीट महामहिम राज्यपाल के लिए आरक्षित रहता है। बाकी का जो राजभवन है वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा यूज किया जाता है, उनके सेक्रेटरीज के द्वारा यूज किया जाता है और उन राजभवनों में जब महामहिम नहीं भी रहते तब भी स्टेट में वीआईपी गेस्ट उसी राजभवन में निवास करते हैं और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित है। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो उस स्टेट में विजिट करते हैं
और विजिट करते समय उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो उनको उन राजभवनों में ठहराया जाता है। वो राजभवन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो उसमें जो हमारा बाकी की जो चिंताएं होती हैं उन महामहिम व्यक्तियों को ठहराने की, वो चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं। महोदय, आज जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा गवर्नर को चुने जाने का, चयनित करने का जो सिस्टम है, वो भी बहुत लोकतांत्रिक है, और अगर उसमें हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। हमारा जो गवर्नर का पद है बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है, और राज्य सरकार की मनमानी को रोकने का एकमात्र जरिया है कि वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उसमें बहुत सारे निर्णय करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि उस व्यवस्था पर भी हमारे न्यायालयों द्वारा उचित कार्रवाई समय समय पर की गई है। अगर किसी महामहिम राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय गलत लिया गया है, कोर्ट में चैलेंज हुए हैं बहुत सारे निर्णय, विशेषकर जो उनके निर्णय चैलेंज हुए हैं वो निर्णय है जो सरकार के फॉर्मेशन से हैं, सरकार के बनाने से हैं, चीफ मिनिस्टर के शपथ से लेके चीफ मिनिस्टर नॉमिनेशन, चीफ मिनिस्टर का सदन में बहुमत, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कई बार चैलेंज हुई हैं। उनमें भी लेकिन अधिकांश समय जो न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय आए हैं। मान्य सदस्य, 1 मिनट आपका और है, और 1 मिनट है। कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड करता हूं सर। उनमें भी जो व्यवस्थाएं रही हैं वो ऐसी रही हैं कि उनमें अधिकांश निर्णय जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा लिए गए वही निर्णय अपहेल्ड हुए हैं। मैं पुनः अपने मित्र से ये अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो ये बिल लाया है इसको वो वापस लें। उन्होंने कुछ हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से या और किसी दबाव में ये बिल लाए हों, लेकिन मुझे लगता है अगर वो बिल वापस लेंगे तो संविधान की मर्यादा बचेगी। संविधान भारत का जो निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर बनाया है, और एक ऐसे पद पर जो बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, उस पे हम किसी भी प्रकार से अगर मुझे लगता है छेड़छाड़ करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं पूरे सदन से ये अनुरोध करूं कि इस बिल के विरोध में अपना मत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Dr. L. Hanumanteya ji, 15 minutes. You have 15 minutes allotted by your party. Sir, thank you, Chairman. Sir, the private member bill moved by Dr. Shivadasan is timely, and this upper house with the representation of different political parties has to discuss thoroughly, and I request the house to have a unanimous decision on this in implementing the bill, so that the friction between the central government and the state governments, particularly the governments in the center and non-political attitude, will prevail in the state, sir. Sir, Article 153 says there shall be a governor in each state, and one person can be appointed, and he can be given 2 or 3 states as in charge. A governor is appointed by the president and is a nominee of the central government. Sir, it is stated that governor has a dual role, that he is the constitutional head of the state, bound by the advice of the Council of Ministers of that particular state. Sir,